हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण विजय कुमारी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण रेवती माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रकाश राव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण पुष्पा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण to all the devotees. Please accept my humble obeisances and dंडवत प्रणाम. I invite you all to the early morning short Bhagavatam class organized by the ISKCON Radha Govinda Temple, Kolai, Bengaluru. And indeed, I invite you for and on behalf of His Grace, Sri Namarishta Das Prabhuji. As usual, we'll begin with the prayers. Prayers are very important. Prayers help us get the mercy of Lord Krishna, the Granth Avatar, Srimad Bhagavatam, and we understand the message that Lord Krishna wants us to understand and put them into our life's practice. I would request you all to also have your own prayers with the mute button on. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna Mataji, Pranam. Om Ajnanatimirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmulitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमापि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. I would request you to follow me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। Janmadasya yato अन्वयाद इति रतस् हरे चार्तेषु अभीः स्वरात्
जन्माद्यस्य जन्मादस्य अन्वयात् अर्थेषु अभिज्ञास्वराट्। स्वराट तेने ब्रह्महृदया आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेने तेने ब्रह्महृदय आदिकवये ब्रह्महृदयादिकवये पुरन्ति यत् मुह्यन्ति यत् सूरयः। सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा तेजो तेजो वारिमृतं वारिमृतां यथा यत्र विनिमयो को यत्र यथा सर्गो त्रिसर्गो मृषा। मया धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना नाम्ना स्वेन सदा स्वेन निरस्तकुहकम् कुहुकं सत्यं परं सत्यं परं धीमहि। धीमहि धर्मः प्रोजहिता कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् धर्मा प्रोजित कैतवो अत्र परमो परमो निर्मत्सराणां मत्सरां सदाम्। सताम् वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् वेद्यं वेद्यं वास्तवम् वास्तवं अत्र वस्तु तत्र वस्तु शिवदम् पदं तापत्रयोन्मूलनम्। तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः श्रीमद्भागवते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते महामुनिकृते किं किं वा वा परमकरै परैरीश्वरः। ईश्वरः सद्योरद्य अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सद्यो सद्यो हृदि हृदि हृदय अवरुध्यते अत्र अवरुन्धन्ते कृतिभिः त्रस्तुभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतम् निगमकल्पतरोर्गलितं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं फलं सुमुखामृतद्रव सुमुखाद्रवसंयुतम्। आयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिक भुवि भावुकः पिबत पिबत भागवतं भागवतं रसमालयं रसमालयं मुहुरहो मुहुरहो रसिका भुवि भूकभावुकाः भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथाः स्वकतः कृष्णः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुरस्तताम् हृदयन्तस्तो हि हृदयस्तो हे अभद्राणि वाणी विधुनोति विनोति सुहृत्सताम्। सुहृनैस्तुकी नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत नित्यं सेवया भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी भगवती भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भवति नैष्टिकी भक्ति नैष्टिकी। Nityam Bhagavata Sevaya, daily recitation and reading of Srimad Bhagavatam takes away all inauspicious things from our life
brings along Lord Krishna, who is the Uttama Sloka, who can bestow us with the sticky bhakti. Right, so let's get along with two slokas we plan to go ahead with, 29 and 30th. Both are for only one subject and both are correlated with each other and only one short purport. So we have enough time with us to discuss. Fifth canto, the creative impetus, chapter 20th, studying the structure of the universe. We have gone yesterday up to sloka number 28. We'll begin with 29. Pushpa Yashomati Mataji, Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Go ahead. Hare Krishna Prabhuji. ये हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी एवं येवतदि मंडोदात् परतः पुष्करद्देवस्तदो द्विगुणायामः समन्तदवकल्पितः समानेन स्वदोदकेन समुद्रेण बहिः आवृतोऽस्मिन् मृदः पुष्करम् देवलनसिकामल कनक पत्रायुधायुधं भगवदः कमसनस्यात्यासनं परिकल्पितम् हरे कृष्ण प्रभु जी थैंक यू Thank you, Mataji. Chitra Mohini Devidasi. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare ओम Krishna. नमो भगवते वासुदेवाय एवमेव दधिमण्डोधात् परतः पुष्करद्वीपस्ततो द्विगुणा यामः समन्तता उपकल्पितः समानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलनशिका अमलकनक पत्रायुत आयुतं भगवतः कमलासनस्य अध्यासनं परिकल्पितं। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। Thank you, Mataji. Prakash Rao Prabhuji, you are a co-host as well. Madhumai Mataji, Okay, Hare Krishna man. Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवमेव दधिमण्डोदात् परतः पुष्करद्वीपस्ततो द्विगुणायामः समन्तता उपकल्पितः समानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलन शिखा अमल कनकपत्र आयुतायुतं भगवतः कमलासनस्य अध्यासनं परिकल्पितम्। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। Done very well, Mataji. Thank you. Anjali Mataji, Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम एवं एव दधि बंडो दत परतः पुष्कर दीपः ततः द्विगुणायामः समन्ततः उपकल्पितः समानेन स्वादु उदकेन समुद्रेण बहिः आवृतः यस्मिन् बृहत् पुष्करम् ज्वलन शिखा अमल कनक पत्रा आयुता आयुतं भगवतः कमला आसनस्य आध्यासनं परिकल्पितम् हरे कृष्ण प्रभु जी। Thank you, Mataji. Prakash Rao Prabhuji, Dandavat Pranam Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवमेव दधिमण्डोदर
परतरः पुष्करद्वीपस्ततो द्विगुणायमः समन्त समन्ततः उपकल्पितः समानेन स्वदूतकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत्पुष्करं ज्वालन ज्वालशिखामलः कनकपत्र यथायुतं भगवतः कमलाव कमला आसस्य आध्यासनं परिकल्पितं। हरे कृष्ण प्रभु। Thank you, Prabhuji. Madhumati Vilasini Devidasi. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Sarapura. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवमेव दधिमण्ड उदात् परतः पुष्करद्वीपः ततः द्विगुणायामः समन्तत उपकल्पितः समानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतः यस्मिन् बृहत्पुष्करं ज्वलनशिखा अमल कनक पत्र आयुतं भगवतः कमलासना स्याध्यायसनं परिकल्पितम्। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Revati Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, you are muted. प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवमेव दधिमण्डतो दात्परतः पुष्करतोपतिष्ठति त्रिकोणयामः समन्तत उपकल्पित समानेन स्वदादिकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलनशिखामलकनक पत्रायुधायुधं भगवतः कमलासनस्य ध्यासानं परिकल्पितम। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mataji. Usha Dayavati Devidasi. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं एव दधिमण्डम् उतात् परतः पुष्करद्वीप तताह द्विगुण अयमय समन्तः उपकल्पितः सम्मानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिः अवृतः अस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलनशिखा अमल कनकपत्र आयुतं भगवत् कमल आसनास्य पादयस्यानं परिकल्पितम्। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna Mataji. Vijaya Kumari Mataji. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं एव तदिमण्डो ददात् परतः पुष्करद्वीपस्तदोद्विगुणायामः समन्तः उपकल्पितः सामनेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहु आवृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वालन शिखा अमल कणः भद्रायुधायुधं भगवतः काम आसनं परिकल्पितम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। Thank you. Madhavi Devidasi ji. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं एव दधिमण्डोदात् परतः पुष्करद्वीपस्ततो द्विगुण आयमः समन्तत उपकल्पितः समानेन साधु उदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वालांशिखा अमलः कनकपत्र आयुतं भगवतः कमल आसनस्य अध्यासनं परिकल्पितम्। Thank you, brother. Thank you, Mataji. Subhara Prabhuji. Dandavat Pranam Prabhuji. दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारी हो प्रभु जी। Very well. Thank you, Prabhuji. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवमेव दधिमण्डलोदात् परतः पुष्करद्वीपस्ततो द्विगुणायामः
समन्तत उपकल्पितः समानेन स्वादूदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलनशिखामलकनकपत्रायुतायुतं भगवतः कमलासनस्याध्यासनं परिकल्पितम्. हरे कृष्ण. Thank you, Prabhuji. Subbarao Prabhuji, can you read synonyms for us? Sure, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Synonyms. Evam eva. Thus, Dadhi Manda Udat, the ocean of yogurt. Parataha, beyond. Pushkara Dvipaha, another island named Pushkara Dvipa. Tataha, than that. Saka Dvipa, Shaka Dvipa. Dviguna Ayamaha, whose measurement is twice as great. Samantata, on all sides. Upakalpitaha, surrounded. Samanena, equal in width. Swadu Udakena, possessing sweet water. Samudrena, by an ocean. Bahihi, outside. Avritaha, surrounded. Yasmin, in which. Brihat, very big. Pushkaram, lotus flower. Jvalana Sikha, like the flames of the blazing fire. Amala, pure. Kanaka, gold. Patra, leaves. Ayuta, ayutam, possessing Ten, 100 crore. millions. 100 millions. Bhagavataha, greatly powerful. Kamala Asanasya, of Lord Brahma, whose sitting place is on the lotus flower. Adhyasanam, sitting place. Parikalpitam, considered. Hare Krishna Prabhuji, thank you. Thank you very much, Subbarao Prabhuji, for wonderful pronunciations. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Outside the ocean of yogurt is another island known as Pushkar Dvipa, which is 640,000 yojanas wide, twice as wide as the ocean of yogurt. It is surrounded by an ocean of very tasteful water as broad as the island itself. On Pushkara Dvipa, there is a great lotus flower with 10 crores of pure golden petals, as effulgent as the flames of fire. That lotus flower is considered the sitting place of the Lord Brahma, who is the most powerful living being and who is therefore sometimes called Bhagavan. We'll go through the second verse as well. Verse number 30. Revati Mataji, go ahead. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्वीपमध्ये मनसोऽत्र नानमक एवार्वासिन पारसीन वर्षयो मर्यादासलो अयुधयो जनास् राययमो यत्र दु सदसृषुतिषु सत्वारि पुराणि लोकबालनाम् इन्दिरादीनां यत् उपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेरुं परिपर रमदः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानाम् अहो रात्रभ्यं परिप्रमदि. हरे कृष्ण प्रभु जी. थैंक यू वेरी मच.
Wonderful, Mataji. You are like a bullet train. One starts, complete it. Thank you. Wonderful. Madhubai Mataji, go ahead. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tadvipa Madhye Manasottara Nama Eka Eva Arvachina Parachina Varshayoho Maryada Achala Ayuta Yojana Uchrayayamaha Yatra tu chatushruषु दिक्षु चत्वारि पुराणि लोकपालानां इन्द्रादीनां यत् उपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानाम् अहोरात्राभ्यां परिभ्रमति. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you, Mataji. Anjali Mataji, go ahead. Prabhuji. तद्वीपमध्ये मानसोत्तरनाम एकः एव अर्वाचीन पराचीन वर्षयोः मर्यादा अचलः अयुतयोजना उच्चराया अयामः यत्र तु चतस्रुषु दिक्षु चत्वारि पुराणि लोकपालानाम् इन्द्र आदीनां यत् उपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानाम् अहोरात्राभ्यां परिभ्रमति. हरे कृष्ण प्रभुजी. Thank you, Mataji. Subbarao Prabhuji, Hare, go ahead, please. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तद्वीप मध्ये मानसोत्तर नामैका एवार्वाचीन पराचीन वर्षयोर्मर्यादाचलो आयुतो योजनोच्छ्रायायामो यत्र तु चतस्रुषु दिक्षु चत्वारि पुराणि लोकपालनामिन्द्रादीनाम् यदुपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानामहोरात्राभ्यां परिभ्रमति. Thank you, Prabhuji. Chitra Mohini Devidasi. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तद्वीपमध्ये मानसोत्तरनामैकः एवा अवार्चीन पराचीन वर्षयोर्मर्याद अचलो आयुत योजनो उच्चार्य आयमो यत्र तु चतस्रुषु दिक्षु चत्वारि पुराणि लोकपालनामिन्द्रादीनां यद् उपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रं देवनामाहोरात्राभ्यां परिभ्रमति. हरे कृष्ण प्रभुजी. थैंक यू प्रभुजी. Thank you, Mataji. Madhumati Vilasini Devidasi. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तद्वीपमध्ये मानस उत्तरनामैक एव आवार्चिन पराचीन वर्षयो मर्यादा चलो अयुत योजना उच्चच्छ्रायायमो यत्र तु चतस्रुषु दिक्षु चत्वारि पुराणि लोकपालानाम् इन्द्रादीनां यदुपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सर आत्मकं चक्रं देवानामहोरात्राभ्यां परिभ्रमति. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Usha Dayavati Devidasi. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तद्वीप मध्ये मनस
नाम एकः एवा अर्वचिन प्रचिन वर्षयो मर्याद अचल आयुत अयोजन उच्चर्य आयमः यत्र तु चतुर्षु दीक्षु चत्वारि पुराणि लोकपालनम् इन्द्रादीनम् आदीनं यत् उपाश्रितात् सूर्यरथस्य मेरुं ब्रह्मातः संवत्सर आत्मकं चक्रं देवानाम् रात्राभ्ययं परिभ्रमति. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Prabhuji. Pranandandini Madhavi Devi Dasi. Hare Krishna Mataji. Go ahead. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तद्वीपमध्ये मनसोत्तर नाम एक एव अर्पचीनः पराचीनः वर्षयो मर्यादा अचला आयुत योजना क्षय अयम यत्र चत्वारि पुराणि लोकपालनम् इंद्र आदिनं यत् उपरिष्टत् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सर आत्मकं संवत्सर चक्रं देवानाम् अहोरात्र वयं परिभ्रमति. हरे कृष्ण प्रभु. थैंक यू प्रभु. Thank you, Mataji. Prakash Rao Prabhuji. Go हरे ahead. कृष्ण तद्वीपमध्ये मानसोत्तरनामैक एवार्वाचीन पराचीन वर्षयो मर्यादा अचलोकयुत योजनो उच्छ्राययामो यत्र तु चतुर्षु दीषु चत्वारि पुराणि लोकपालानाम् इन्द्रियादीनं यदुपरिष्टतात् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संसरात्माकं चक्रं महोरात्राभ्यं परिभ्रमति. हरे कृष्ण प्रभु. Thank you very much. Pranandandini Madhavi Mataji, can you read synonyms for us? थैंक यू प्रभु. यस प्रभु. तद्वीप मध्ये within the island Manasottara Nama by name. Hare Krishna Prabhuji, I'm not able to see. Eva Manasottara Nama named Eka one Eva indeed Arbachina on this side, Parachina and beyond or outside, Varsayo of tracts of land, Maryada indicating the boundary, Achalaha a great mountain, Aryutaha 10,000, Yojana 8 miles, Uchraya Ayama whose height and width, Yatra where, to but, Chatusrusu in the 4 Dikyu directions, Chatwari 4 Purani cities, Loka Palanam of the directors of planetary systems, Indra Adinam headed by Indra, Yat of which, Uparisattat on the top, Surya Rathasya on the chariot of the sun god, Meru mountain, Paribhramataha, while circumambulating, Samvatsara Atmakam, consisting of one Samvatsara, Chakram, wheel or orbit, Devanam of the demigods, Aho, Ratravayam, by the day and night, Paribhramati moves around. Hare Krishna Prabhu. Thank you, Prabhu. Thank you, Mataji. Thank you very much for wonderful synonyms. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. In the middle of that island is a great mountain named Manasottara, which forms the boundary between the inner side and the outer side of the island. Its breadth and height are 10,000 yojanas, 80,000 miles. On that mountain, in the 4 directions, are the residential quarters of demigods such as Indra. In the chariot of sun god,
The sun travels on the top of the mountain in an orbit called the Samvatsara, encircling Mount Meru. The sun's path on the northern side is called Uttarayana, and its path on the southern side is called Dakshinayana. One side represents a day for the demigods, and the other side represents the night. Purport. Purport by Srila Prabhupada ki jai. The movement of the sun is confirmed in the Brahma Samhita 5.52. Yashyagraya Brahmati Samvarta Kala Chakraha. The sun orbits around Mount Sumeru for 6 months on the northern side and for 6 months on the southern side. These adds up to the duration of a day and night of the demigods in the upper planetary system. In fact, 28, 29, 30 are correlated with each other. We learned yesterday from Krama Kishori Mataji about verse 28, which actually said, may the Antaryami, the Supreme Lord, who enters within and directly maintains the living beings by the function of the pranas, under whose control the universe is created, please protect us. That was yesterday's verse 28, where we learned pranas to be very important, through which Lord enters into us and controls our maintenance. Today we are talking about 2 more verses. Again, it's part of the geography. And the first verse talks about an island and a mountain in the middle of the island. This mountain is actually a mountain range, and thus it divides the island into inner part and the outer part. Very, very similar to what we see in continent island of Australia. The Australia has a huge mountain range which separates the outer periphery of beaches all around and the inner part of the jungles which are not or less inhabited. The environment there is not conducive, so good for human being to survive. They call it outer back, and it remains mainly as sheep stations. Very similar description is given here. Basically, if you really look at it, all these islands that are formed are the volcanic islands. As the volcanic activity grows in the beds of the oceans, it gradually mounts out itself through the surface of the water and becomes like a huge mountain. This mountain ultimately, through the peak, discharges lava, and once the lava is discharged, the mountain outer layer remains as if an empty box. And so these empty box roof collapses and makes what is known as cauldron.
You will see this typical thing in New Zealand, where most of the cauldrons are even active, and when the water comes in contact with the lava, it produces a steam, or what they call a geyser. At the moment, there are so many live geysers on the surface of New Zealand, and you can see some of the geysers with a pressure that jets out a hot water high up in the air. This is what has been described here. We learned the ocean of yogurt yesterday, and beyond the ocean of yogurt, there is now a dvipa known as Pushkar Dvipa. This Pushkar Dvipa is covered by ocean of a very tasteful water. This island is very characteristic. It has a huge lotus flower with the petals made of pure gold, and they are in the range of 10 crores or plus. So huge structure. And these are self-illuminated, and that's why they are effulgent and looks like flame of fire. This is actually a place for Brahma to sit and meditate. Manasattara is a mountain in the same Pushkar Dvipa, and this mountain, Manasattara, looks very close to Minnesota. But anyway, as I said earlier, it's like a hill range, and that divides the inner outer back from the periphery of beaches and survivable atmosphere. If you look at the continental island of Australia, then all major cities are on the periphery, on the beaches. And that's where the entire population of Australia lives. The mountain the mountain which is known as Milasatara is on top, occupied by 4 residential quarters in 4 different directions, where the various demigods like Indra, etc. stays. This mountain leads to 2 circles, one towards the north and the other towards the south. These 2 semicircles actually describe the movement or the orbit of the sun god on his chariot. When it's going through the northern loop, it is called as Uttarayana. Uttar means north, and Uttarayan means you are actually passing through the north. This means the seasonally winter is going into summer. Similarly, when the loop is on down south, it's known as Dakshinayana, and that's where the summer enters into winter. You all know that the oblique axis of Earth and its rotation produces various seasons, and these seasons then remarkably allow us to live a happy life and produces some kind of
variation in the life. Any question, any query, any doubts, any commentary, any addition? I am open to all suggestions. I Not think this is mainly Surya God, Sun God, yes, traveling in the Kasha, Samvatsara yes, Kasha, na? yes, This is Brahma Samvata he quoted, that was third line, Prabhuji. Actually, if you permit me, I will read the sloka, Brahma Samhita sloka. yes, 5.52, Prabhuji. yeah. यच्चुरेक सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजः यस्मज्ञया भ्रमति संभृत कालचक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि. Same thing, this same the what the purport here Prabhupada written, that the meaning of this sloka, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Prakash Rao Prabhuji, for that additional comment. Wonderful. Thank you. Any other comment, Subbarao Prabhuji, Chitra Mohini Devi Dasi ji? Prabhuji, Hare Krishna. Yes, Mataji. So beautiful to imagine. I don't know. When we Yes, see it's very happy to yes. imagine. Very beautiful In, imagination. in fact, when I was reading Mataji, I felt that this becomes a very nice scenario for meditation. Oh. Yes. We Thank only recite Prabhuji when we do Gayatri, so Jambudvipe, but we don't know so much it is there. Well, we are lucky that we are able to know something. As Mataji said, some imaginary also there. Yeah. Hare Krishna, Prabhu, very nice Prabhuji. Hare Krishna. Thank you very much. It's a wonderful slope. The pairs are making a wonderful description and gives you a nice platform for meditation, imagining 10 crores of petals. Brahmaji is sitting on it and it's looking like effulgent, fiery. Well, if there are no further questions, thank you very much for attending the class. All of you have a wonderful Krishna conscious day. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Thank you very much Hare to all. Krishna, Prabhu. Hare Pranam. Krishna to Hare all. Krishna. Thank you, Hare Prabhu. Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji.